Assalamualaikum sir. जी वालेकुम सलाम जी जी Sir, this is today is my first day. आपके साथ जो लेक्चर ले रही हूँ 20 की अटेम्प्ट दी हुई थी और आपके जो लेक्चर्स थे उसने बहुत हेल्प की थी उनमें, करंट अफेयर्स, एसे और पाकिस्तान स्टैंड। उसके अलावा झंडे का थोड़ा सा था, थोड़ी फिगर्स वहां से भी यूज हो गई थी। जी आप कह सकते हैं कि आपके लेक्चर ने एक किस्म का पास करवाया वो ये जो एग्जाम्स थे पाकिस्तान के करंट के। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच। तो इंशाल्लाह अब भी हम कोशिश करेंगे कि आप सारे पास ही हों, क्योंकि इंशाल्लाह सर। हम नहीं चाहते कि इम्तहान ही देते जाएं और पास ना हो। I will be talking in English and Urdu, both languages. The point is to make myself understood by you people. My language is very simple, therefore I don't believe that it will be difficult for you. Particularly the objective is to bring you or create an English environment and you are familiar with these words because you know the mind has its own psyche. जिस तरह की बातें इसको सुनाएंगे ये वैसे सीखता है. So we have to push the mind into the English word. English is generally our weakness. अभी मैं एक देख रहा था, there was a student who came from abroad. तो उसने कहा कि I was quite hopeful that I will clear essay paper or English Pressy and composition because I spent a lot of time abroad and he was well versed in English language. His pride was quite justified, but unfortunately he failed in essay paper. वो कहता मुझे बड़ी अफसोस हुआ खास तौर पर जब मैं essay में फेल हुआ. It means essay has its own requirement. You may be well versed in language, spoken English, you could be fluent, I mean. लेकिन अगर उसकी जो प्री-requisites हैं ऐसे की आपने पूरी नहीं की, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. You could be even PhD or you could be even from England or from America. बुनियादी चीजें जो ये हैं, the examiner is number one very much particular about the grammar. You may be using high sounding words, लेकिन पॉइंट ये है कि सिंपल सेंटेंस हो, करेक्ट हो, टू द पॉइंट, रेलेवेंट, एंड सेंटेंस मस्ट बी कन्वेइंग सम सेंस. वो एक सेंस कन्वे कर रहा हो, ख्यालात को अनएम्बिगुअस मैनर में एक्सप्लेन कर रहा हो, एम्बिग्विटी ना हो उसमें. कहते हैं कि व्हाट इज द बेस्ट कम्युनिकेशन इन द वर्ल्ड? द बेस्ट कम्युनिकेशन इज दैट if the audience or the reader understand your point of view in the sense and spirit in which you want to convey your message. If he or she is unable to understand that point in the same sense and the same meaning which you carry or you have in your mind, it means you have not communicated at all. The point is, you must be clear about the thoughts yourself. आपको बात का इल्म होना चाहिए जो आप कहना चाहते हैं, और ब्रीफेस्ट पॉसिबल वर्ड्स में. अभी एक स्टूडेंट बात कर रहा था कि जी मेरे पास मटेरियल काफ़ी है, स्पीड मेरी ठीक नहीं है, इतने थोड़े वक्त में सारा लिख नहीं सकता या सकती. तो मैंने उसे कहा कि आपने देखा है कि ये प्रेसी राइटिंग क्यों सिखाया जाता है? प्रेसी राइटिंग सिखाया जाता है कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को ब्रीफेस्ट पॉसिबल वर्ड्स में एक्सप्लेन या एक्सप्रेस करने की पोजीशन में आ जाए. तो मैंने उन्हें कहा कि आप ऐसे करें एज एन एक्सरसाइज, आप एक पेज लिखें और मुझे भेज दें. मैं उसी पेज को उसके एसेंशियल मैसेज के साथ आपको उसकी हाफ लेंथ में आपके सामने पेश कर दूं, बट दैट विल बी कैरिंग द एसेंशियल मैसेज ऑफ दैट पेपर और दैट राइट अप. फिर मैं क्या आप अंडरस्टैंड करेंगे कि आप अननेसेसरीली चीजों को प्रोलॉन्ग कैसे करते हैं. तो लिहाजा आपने जो मैसेजेस आपके पास हैं, जो इंफॉर्मेशन आपके पास है, जो आइडियाज आपके पास हैं,
ان کو کم نہیں کرنا، آپ نے ان کی تعداد میں کمی نہیں کرنی، وہ آئیڈیاز اتنے ہی ہونے چاہیے، وہ انفارمیشن اتنی ہی ہونی چاہیے، لیکن الفاظ کی تعداد کم کرنی ہے۔ یہ ایک فن ہے، یہ سیکھیں تاکہ آپ کی آنسر شیٹ میں بہت زیادہ نالج ہو، لیکن اسی 3 گھنٹے میں پیش کیا گیا، زیادہ پیجز کی تعداد ضروری نہیں ہوتی۔ اگر آپ مجھے کہیں کہ میں نے یہ 6 منٹ میں جو باتیں کی ہیں آپ اس کو 1 منٹ میں بیان کریں، تو میں 1 منٹ میں کر دیتا ہوں۔ ابھی میں نے جو بات کی ہے، اب میں وہ آپ کو جیسے کہتے ہیں نا تجربہ کر کے دکھا دیتا ہوں۔ میں نے اتنی بات کی ہے کہ جب آپ لکھیں غیر ضروری طور پر لمبا نہ کریں، ٹو دی پوائنٹ ریلیونٹ ہوں، بریفیسٹ پاسبل ورڈز میں اپنے مافی ضمیر کو بیان کریں، گرامیٹیکلی وہ کریکٹ ہو، سمپل سینٹینسز ہوں۔ اتنی ہی بات میں نے کی، 6 منٹ بھی لگائے ہیں میں نے، یہ آدھے منٹ میں بھی کر دی ہے۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ تمام رائٹس اب میں یہ پوائنٹ رکھیں، ایون آپ کے کرنٹ افیئر ہیں، پاکستان افیئر ہیں، زیادہ سے زیادہ انفارمیشن لائیں اور بلٹس کی فارم میں آپ چیزوں کو پیش کرتے جائیں، کیونکہ ایگزامینر خود بھی لمبے لمبے پیراگرافز یا لمبے لمبے سینٹینس کو اچھا نہیں سمجھتا۔ اچھا پیس آف رائٹنگ وہ ہے جو چھوٹے چھوٹے سینٹینسز پر مشتمل ہو۔